أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, today we'll be talking about three items that I sent you on the group. The first one is Safwatul Masadir again, but this is now with the English version. So just let's have a look for 5 minutes and inshallah then we will move on. So this is the Safwatul Masadir in English. You can see all the chapters over here. The categories of Sulasi Mujarrad, the abwab of Sahih. The strong verb is called Sahih. Sahih means a verb that does not has any sick letters. Huruful illah. So in Arabic, the sick letters are called huruf illah. Huruf illah. इल्लत के मायने वैसे तो बीमारी होते हैं, राइट? उर्दू में भी इस्तेमाल होता है हुरूफ फे इल्लाह यानी sick letters, right? So there are three sick letters: Hamza, Waw, and Ya. And they can also be used as Waw and Ya can also be used as vowels, long vowels, and they can also be appearing in the root letters as consonants. Okay, so this is very necessary to understand the differences between Waw maddi and Waw ghair maddi, Ya maddi and Ya ghair maddi. Another very important point to note down here is that alif is always a vowel. If it is not a vowel, it's also written like this, but then we call it Hamza. Either it will have a fatha or a kasra or a dhamma on top of it, or either it will have a Hamza sign with it, right? In all the cases, or either if it is sakina, then also this is all of these are Hamzas. They are not alif. They are not alif. So where are the alifs then? What do we call an alif? An alif is always preceded by a fatha. So if you have a letter, for example, here we have meme with a fatha, then followed by this sign. So this is now alif. You can notice it in the scripts that alif is written like this. A turn on the right. When you reach the top, you turn it to the right a little bit, not more, okay? A little bit. ऐसे करके, right? So this is called alif. It can be a ma, it can be a ja, it can be a wa, it can be a ha. All of these are alifs, right? So we know now we understood about huruf illah, and now about the waw maddi and waw maddi and ya maddi, and also about waw and ya as consonants, right? So this was an explanation about sahih. So sahih is a root word or root letters that don't have huruful illah in them. They don't have huruf illah, and they don't have extra letters with them, right? Extra letters are also not there. Okay, so what is a muda'af? A muda'af is root letters, a set of root letters that has a letter repeated in it, like barrun, addun, or adda. As a verb, it would be adda, hamma, hamma, farra, farra. So all these are muda'af. Now there is a difference between muda'af and mudaf. So mudafun ilayh is in nahu when we understand the sentence formation. Now this is muda'af, right? So the same letter occurring twice. Okay, so this one is Mahmuz. A Mahmuz is, why don't we just go to the definitions themselves? Page 15. चलो यहाँ से शुरू करते हैं. So we discussed already about, we know about Sulasi. Sulasi means 3 letters. Mujarrad means they don't have any attachments like Bab Fa'al or Bab Taf'il or Bab Fa'ala, right? They are Mazidun fi. But here we are discussing Mujarrad. Now, what is a Sahih? Sahih means a strong verb. Is that word whose root letters do not have Hamza or any
weak letters, alif, waw, or ya, or two letters of the same type. For example, this one. So sahih is, I have explained it in detail. Al-badlu, al-bastu, al-budlanu, al-bulugu, at-tarku, right? And so on. Because I'm giving an introduction about it. So inshallah, we will do all these words in detail. Inshallah, you will be doing it. So the first bab in Sahih is Fataha Yaftahu, I think. What was it? Fataha Nasara Yansuru. The first one was Nasara Yansuru, Sulasi Mujarrad. Then here it is Sulasi Mujarrad with Daraba Yadribu. Here we are, Daraba Yadribu. Then all the Masadir with Daraba Yadribu. Fi'l Madi will be on the wazn of Daraba, and Fi'l Mudari will be on the wazn of Yadribu. And then Sami'a Yasma'u. So Fi'l Madi will be on the wazn of Sami'a, Jahila, Yajhalu, Hazina, Yahzanu, Hafiza, Yahfazu, Hamida, Yahmadu, right? So moving on, the third bab in Sulasi Mujarrad is Fataha Yaftahu, Ba'atha Yab'athu, Balaqa Yablaghu. How? So Yablaghu is in both Yablughu and Yablaghu, both are used. Jahada Yajhadu, and so on. Okay, it is also possible for quite a few of the Masadir to exist in two abwab, or maybe in three abwab of Sahih. Okay, this is also possible. Inshallah, I will bring the examples in another lesson. Now, this is Karuma Yakrumu. Karuma Yakrumu. Like Basura Yabsuru, Ba'uda Yab'udu, Jadura Yajduru, Hasuna Yahsunu, Khabutha Yakhbuthu. Right? So this is the wazn for Karuma Yakrumu. Next is Hasiba Yahsibu. Right? So they have only given two of them because it is not very used very much. The bab Hasiba Yahsibu is not used many times in the Quran. Now the definition of Muda'af, double-lettered verb is a verb having as its root letters two letters of the same type. For example, Bassa. So actually there are three letters, Ba, Sa, and Sa again. So we merge them together. An idgham take place here, and then we say Bassa and not Bassa, right? So about Mudaf, we have four abwab in it: Nasara, Daraba, Sami'a, and Karuma. So these are examples of Nasara Yansuru with the Mudaf. Batha Yabuthu, Balla Yabullu, Jarra Yajurru, Hatta Yahuttu, Hakka Yahukku, Halla Yahullu, Khassa Yakhussu, and then Da'a Yadu'u, Daqqa Yaduqqu, Dalla Yadullu, Damma Yadummu, Radda Yaruddu. So these are a few examples. I'm reading these examples deliberately because it is very important to understand that always Ain and Lam are the same letters here. So if you have a Rasha, then actually it is Rash-sha, like two sheens. Ra, Sheen, Sheen is the set of root letters. Rasha, Yarushu, Sabba, Yasubbu, Sadda, Yasuddu, Marra, Yamurru, Salla, Yasullu, and Shajja, Yashujju. You can also relate to the English counterparts. Shadda, Yashuddu, Shaqqa, Yashukku, Shamma, Yashummu, Sabba, Yasubbu, Sadda, Yasuddu, Dhamma, Yadummu, and so on. So this was about Muda'af with which bab? With the bab Nasara Yansuru, and we always know that Nasara Yansuru is the most common bab in the Quran. Now this is Daraba Yadribu in the same Muda'af category. Batta Yabittu. Now it's not Yabuttu here, right? Yabittu, because it's on the wazn Yadribu. So it has to be Yabtitu. So it changes to Yabittu, right? Okay, Tabba Yatibbu. You see, Tabbat Yada Abi. Okay. Tamma Yatimmu. Yutimmu ni'matahu alayka. Jadda Yajiddu. Right? I'm not going into examples, otherwise it will make things complicated. Jaffa Yajuffu. Habba Yahibbu.
Now look here. Yahibbu, zalla, yazillu, and so on. Now this is sami'a yasma'u again with mudha'af. Barra, yaburru, yabarru, barra, yabarru. And then basha, yabashu, adda, ya'addu, ladha, yaladhu. Right? There are a few examples. Massa, yamassu, massa, yamassu. So you can easily spot the difference between Sad and Sin and how drastic change it makes if we don't pronounce it correctly. So that's why we are always very strict at tajweed and makharij. From karuma yakrumu, we only have habba yahubbu. So next one is mahmuz. Next category of root letters. Next category of maddah. Al-mahmuz is a word having a hamza at a root letter. If the fa kalima has a hamza, it is called mahmuzul fa. For example, ajara. If the ain kalima has a hamza, it's called mahmuzul ain. For example, sa'ala. If the lam kalima has a hamza, it is called mahmuzul lam. For example, qara'a. Now it's very easy to understand that if the first letter is hamza, it's called mahmuzul fa. If the second letter is hamza, it's called mahmuzul ain. If the third letter is a hamza, then it's called mahmuzul lam. Now mahmuzul fa. Mahmuzul fa comes in 4 of the thulathi mujarrad categories. Bab nasara, bab daraba, bab sami'a, and bab karuma. So again from bab nasara, we have mahmuz, ajara, ya'juru, akhadha, ya'khudu, akala, ya'kulu, and amara, ya'muru. Right? These are only 4 examples that are most frequently used in the Quran. From bab daraba yadribu, it is adaba, ya'dibu, asara, ya'siru. So now the ain kalima, the harakat of the ain kalima changes here. Ya'muru, it was here ya'muru, now it is ya'siru. Because of the changing in bab. Now bab is daraba yadribu. And the last example, afaka ya'fiku. Afaka ya'fiku. Okay, then in the sami'a yasma'u, we have athima ya'thamu. Adina ya'zanu. Amina ya'manu. From bab karuma yakrumu, abula ya'bulu, athula ya'thulu, aduba ya'dubu, aruba ya'rubu. These are 4 examples, right? You haven't heard these words many times in the Quran, I'm sure, because these types of examples don't exist very frequently. But the most important ones are these. So if we go through these, then inshallah we'll not be having any troubles when we are reading the Quran. Then the mahmuzul ain. Now the second category of mahmuz is mahmuzul ain. We have 3 abwab in mahmuzul ain: bab sami'a, bab fataha, and bab karuma. Bab sami'a yasma'u. For example, rathima. ये सा है या हमजा है? Ra'ima. Okay, ra'ima. To heal up. Ra'ima yar'amu. Sa'ima yas'amu. From bab fataha yaftahu, in the mahmuzul ain category, da'aba yad'abu, ra'asa yar'asu, sa'ala yas'alu. The most important is sa'ala yas'alu. It has been used many times. Karuma yakrumu from mahmuzul ain. Al-ba'su, ashok. Okay. Ba'usa yab'usu, la'uma yal'umu. From mahmuzul lam, in the category sulasi mujarrad, we have 5 abwab in it: bab nasara, bab daraba, bab sami'a, bab fatiha, and bab karuma. So from bab nasara, we only have 1 example. That's the most important. Qara'a yaqra'u yaqru'u. Qara'a yaqru'u. Okay, so this is also found in other abwab as well. Okay, qara'a yaqra'u is also correct. Qara'a yaqru'u is also correct. Okay, and this fa'il is qari'un,
It can also be written as qarin and then uqru'u, right? So the most frequently heard word is iqra, la taqra, right? So that's from another bab. Now here daraba yadribu, we have hana'a. Okay, let's not go very deep into the examples, otherwise we'll be going short of time. Bada'a is very important. Bada'a yabda'u, qara'a yaqra'u. Here you look, एग्जाम्पल सामने आ गई. फतह यफ्ताहू से भी आता है qara'a, और इसी तरह आपने ऊपर देखा यहाँ पर qara'a yaqru'u से भी आता है. ठीक है, तो दोनों हिसाब से ये आ सकता है. अच्छा जी. मला'a यमलa'u, नशा'a यंशa'u. अच्छा, अब यंशa'u भी आता है, यंशि'u भी आता है. ठीक है, अब ये हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑल फोर आर वेरी इंपॉर्टेंट. बदा'a, qara'a, mala'a and nasha'a. Nash'at al-ula, ansha'nakum. So all of that is nasha'a. Okay, then karuma, yakrumu. So these are not very important. These are not very much used. I'm sorry, they are important. Every word of Quran is important, but they are not frequently used. Now the next category. So the first category we saw was aqsam sahih, sahih. Then we had mahmuz. Mahmuz. In mahmuz we have three categories: mahmuz al-fa, mahmuz al-ain, mahmuz al-lam. Then we have the third category, that is called al-mu'tal. Al-mu'tal means weak verb. It is a verb that consists of a weak letter in its original letters. It has three types. Mu'talul fa. Mu'talul fa, the resembling verb. The resembling verb is that verb whose fa kalima is a weak letter. For example, wa'ada. It is called al-mithal. So mu'talul fa is called mithal. Mu'talul fa is called al-mithal. Now this mithal is a terminology of al-musarf. वैसे तो मिसाल example को कहते हैं, right? But this mithal is a terminology of al-musarf. So here the word mithal means mu'talul fa. The word, the root letters that have a weak letter at the fa kalima is called mu'talul fa, also called mithal. If the weak letter is if the weak letter is a waw, then it is called misale wawi. If it is a ya, then it is called misale yai. Right? It's simple to understand. सबसे पहले misal is the set of root letters or a masdar that has the first letter, the fa kalima, as huruf illah. So huruf illah can be like they can be of two types, right? We have already discussed hamza before. So now either it is misale wawi or misale yai. Misale wawi, misale yai. If it is okay. Number two, then the second type of mu'tal is mu'talul ain. So again, mu'talul ain, the hollow verb. It is that verb whose ain kalima is a weak letter. For example, qala. It is called al-ajwaf. Al-ajwaf. Now, mu'talul ain is called al-ajwaf. Now, right, please, whenever I underline something, please write it down so you can also, inshallah, relate to it. If the weak letter is a waw, then it is called ajwaf-e wawi. If the weak letter is a ya, then it is called ajwaf-e ya'i. Then the third one, the third category of mu'tal is again mu'talul lam. And mu'talul lam is called naqis. So mu'talul lam, the defective verb, is that verb whose lam kalima is a weak letter. For example, rama, ra, mim, ya. It is called al-naqis. If the weak letter is a waw, then it is called naqis-e wawi. If the weak letter is a ya, then it is called naqis-e yai. ठीक, इंशाल्लाह हो सकता है ये सारी बातें आपको. It is possible that you don't remember all these at the same time. You have to look at the lesson again and just write the main points, write the words like misal, like ajwaf, right? Like naqis, like mahmuz. Now mahmuz has three categories: mahmuz al-fa, mahmuz al-ain, mahmuz al-lam, right? So ajwaf, for example, as I have explained. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह. So mu'talul lam, the defective verb, is that verb whose lam kalima is a weak letter. For example, ra, mim, ya. It is called a naqis.
If the weak letter is a waw, it is called naqis wawi. If the weak letter is a ya, then it is called naqis yai. Naqisul yai. Okay, so let's move on. Now the next category is misal. Misal wawi. Misal wawi. Right? So in the Sulasi Mujarrad category, we have Bab Daraba, Bab Sami'a, Bab Fataha, Bab Karuma, and Bab Hasiba. For example, we have Wasaba, Yasibu, Wasaqa, Yasiqu. So Wasaqa, Yasiqu is actually like Barbazne Daraba, Yadribu, Yadribu. But because uh, the fa kalima is a weak letter, that's why it changes. It changes its shape. Inshallah, we will be discussing each and everything about these verbs in detail. But first, to understand them properly, to learn the terminology. So if I say, for example, amara, right? So the student should know that it's a mahmuzul fa. It's a mahmuzul fa. Amara is mahmuzul fa, right? Wasaba. What is wasaba? Wasaba is misale wawi, right? So वसका वसका बहुत यूज होता है इसके बाद आते हैं इंशाल्लाह वजदा ओ इतना ज्यादा यूज होते हैं वजदा यजिदु वरदा यरिदु वजरा यजिरु वजना यजिनु वصف يصف وصل يصل وعد يعد وعظ يعظ وقف يقف ولج يلج ولد يلد. So this was the ضرب يضرب. Now this is again from bab سمع يسمع. وجع يوجع وجل يوجل ولع يولع بوزن يسمع. So سمع يسمع وجع يوجع. Then from باب فتح يفتح we have ودع يدع وضع يضع وقع يقع وهب يهب. Right? These are all very frequently used in the Quran. Let's move on, inshallah. Karuma, yakrumu. From Babi Karuma, yakrumu. Misale wawi. Wasama. Wasuma. Not wasama, sorry. Wasuma. Wasuma. Yawsumu. Wa'utha. Yaw'uthu. Now, can anyone... no one can memorize the whole dictionary, okay? This is all about dictionary. We are talking about the dictionary. In the dictionary, you will not find any of these words. What you will find is only this. These are the masdars. So you find the masdar over there, and maybe you have some examples of this masdar, the usage of this masdar. Okay, but the fail madi, fail mudare, fail amr, fail nahi, fail nafi, fail istifham, all of them, isme fa'il, isme maf'ul, all of them have to be made by yourself, inshallah. And once you learn the formula for it, inshallah, it will be easy. Hasiba yahsibu. For example, waritha yarithu, wari'a yari'u, warima and yarimu. Then we have misale, al-mithalul ya'i. When the first letter is a ya. When the first letter is a ya, of course, it's the ya consonant. Here we have 4 abwab in Sulasi Mujarrad. So I'm sure you understand that when we say that there are 4 abwab in this category in misal al-ya'i, then in misal al-ya'i, then the thing is that actually there are 6 abwab, but in the other 2 abwab we don't have any words. We don't have any masadir in the Quran. Okay, we don't have any masadir, and especially in the Quran. So here al-maisiru, yasara, yasara, yaisiru, and then ya'ara, yai'iru. From Sami'a Yasma'u, it is yatima, yaitamu, and then yaqina, yaiqanu. From the word yaqin, al-yaqinu, right? Al-yatimu se yatima, yaitamu. और al-yaqinu से yaqina yaiqanu. From bab fatah yaftahu we have al-yan'u, to become ripe. Yana'a, yaina'u, yani', ina', la tayna'. Right? So
inshallah, instead of moving to complicated things, first we should have an idea about what the city looks like, and then we will go into each and every neighborhood, and then we will see each and every house in that, inshallah. So once we understand what the city looks like, then we can make parts of it, and we can arrange our learning according to that. Yasura, yaisuru. Acha ji. Now the next one is ajwaful wawi. Al ajwaful wawi. Al ajwaful wawi comes in 3 of the sulasi mujarrad categories. अजवफ़े वावी, इसके बीच में वाव है. अल बाउलु, बाला यबूलु, ताबा यतूबु, जाजा यजूजु, जाआ यजूउ, खाना यखूनु, दारा यदूरु, दासा यदूसु, दामा यदूमु, zaba yadubu. So we don't say zaaba, we say zaba, right? Because it's not a hamza, it's actually a waw converted into an alif. Zaba yadubu. For example, az-zawqu is the masdar. So dal, waw, and qaf are the root letters. So this is a ajwafe wawi. Ajwafe wawi, when we take it to the fi'l madi ma'ruf, it changes to zaqa, not zawqa. Okay, zaqa yaduqu, and then zara yazuru. Ziyarat se zala yazulu, sada yasudu, saqa yasuqu, sama yasumu, sana yasunu. And then this is very frequently used in the Quran. Tafa yatufu, tala yatulu, ada yaudu, ada yaudu. And then fata yafutu, marjana, faza yafuzu, and so on. I will not discuss all of these. I just want to give you an idea about it. Taha yatihu. Now here it's not yatuhu, it's yatihu because of the difference in bab. Now it's bab daraba yadribu. So the i'lal also changes according to the bab. So sometimes it's like that, ajwafe wawi, sometimes it's like this, sometimes it's like this, and sometimes it's like this. You see the differences? From Sami'a Yasma'u, we have Khafa Yakhafu and Nama Yanamu. Very important verbs. Al Ajwaf al Yai. Now, in the center, at the Ain Kalma, if there is a Ya. Al Ajwaf al Yai comes in 4 of the Sulasi Mujarrad categories. Okay. Al Ghaitu, Ghata, Yaghutu. Then, from the Bab Daraba Yadribu, Bata, Yabitu. Now here it changes to Yabitu, not Yabutu, right? Because of the change in Bab. And then Ba'a, Yabi'u, Bana, Yabinu, Taha, Yatihu, and so on. Then from Sami'a Yasma'u, actually, the masdar itself is an-nailu. What is it? An-nailu. Noon, ya, lam. Root letters changes to nala. And then yanalu. Nala, yanalu. Haba, yahabu. Okay. Sha'a, yasha'u. Very important. Sha'a, yasha'u. Actually, the masdar is al-mashi'atu. Al-mashi'atu. Right? So, meme is also not the root letter. The root letters are sheen, ya, and hamza. Sheen, ya, and hamza. So the madi for it is sha'a, and then according to the bab yaftahu, it is yasha'u. Then we have naqis al-wawi. Naqis al-wawi comes in 5 of the sulasi mujarrad. So we know that naqis is the root letters that have huruf illah at the last letter lam, at the lam al-fa'il. So here we have naqis al-wawi. So al-badwu, ba, dal, and waw are the real actual root letters. But the fail madi becomes bada, yabdu, bala, yablu. Now look at the masdar itself. Al-bala'u. Al-bala'u. Now here alif lam
is for the indication for noun, alif lam, and then the hamza at the end is another extra hamza. It's not the root letter. The root letters are ba, lam, and alif. So the fi'l madi is bala and the fi'l mudari is yablu. Actually, it should have been yablu, 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 yablu. But it is not possible to pronounce. So it changes to yablu. At-tilawatu. So tala, tala, yatlu. Tala, yatlu. Bala, yablu. Khala, yakhlu. Da'a, yad'u. Dana, yadnu. Raja, yarju. Saha, yashu. And then ata, ya'tu. Ada, ya'du. बस ये खत्म होने वाला है इंशाल्लाह. थोड़ी सी जहमत आप मजीद दीजिए इंशाल्लाह. ये एक बार मैं इसका आप लोगों को एक ओवरव्यू करा दूं, ये बहुत जरूरी है. वी आर एट पेज 25. अल-अफ़ू, अल-अफ़ू मस्दर. फिल मादी अफ़ा, यअफ़ू. अला, यअलू. कसा, यक्सू. महा, यमहू. नजा, यंजू. Also very important one. All these are very frequently used. Jasa, yajsi. Now jasa, yajsi, you will not see it very frequently in the Quran. And then radi, radiya. Sami'a, yasma'u. Ar-ridwanu. Now noon is not a root letter. Alif is not a root letter. Ra, dad, and waw are the root letters. Ra, dad, and waw. So ra, dad, and waw changes to radiya, yarda. And then in the next verb we have maha, yamha. Rakhwa, yarkhu. Okay, let's move on. An-naqisul ya'i. What if the lam kalima is a ya? Like kinayatu. चलें आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह. अब ये हो रहा है कॉम्प्लेक्स. नाउ इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स. You may have observed until now that it's going more complex, right? So inshallah, baka yabki, bana yabni, sana yasni, jara yajri, jaza yajzi, haka yahki, dara yadri, rama yarmi, saba yasbi, saqa yasqi, shafa yashfi, hasa ya'si, ala ya'li, قضى يقضي, كفى يكفي, مشى يمشي, مضى يمضي, هدى يهدي. All of these are very, very, very important. Each one of them. Then from سمع يسمع we have بقي يبقي, خشي يخشي, خفي يخفي, عمي يعمي, غشي يغشي, نسي ينسي. رمى يرمي, سعى يسعى, رعى يرعى, سعى يسعى, طغى يطغى, and naha yanha. Okay, so I think this is all for today. Now this is the lafif category. What is a lafif? A lafif is the clustered verb is a word having two weak letters in its original letters. It is of two types. Either it is a lafif mafruq or it is a lafif maqroon. So the first one, lafif mafruq, is the clustered verb with separation, यानी फा और लाम कलिमा जिसका हुर्फ इल्लत हो. और लफीफ मकरून जिसमें दो एक जैसे दो करीब करीब के फा और आइन या आइन और लाम जो है वो लफीफ हो. लफीफ मफरूक, लफीफ मकरून. So inshallah, let's not dive into these categories. This will be this will be too much for you for one day, inshallah. Now this is a summary. The 6 categories at a glance. Now what are these? These are all abwab. Noon se nasara yansuru, dad se daraba yadribu, sin se sami'a yasma'u. fa se kya hai? Is it fata yaftahu? Fataha yaftahu. Ahsanti, mashallah. And what about kaf? Karuma yakrumu. And ha is hasiba yahsibu. Mashallah, very good. Ahsanti, very correct and on time answer. So Sahih has all these 6 abwab, but Mudaf doesn't have 6 abwab. It has 4 of the 6. Then Mahmuzul Fa has 4 of the 6. Then Mahmuzul Ain has 3 of the 6. Mahmuzul Lam has 4 of the 6. In the same way, Misale Wawi ke 5 abwab hain. Misale Yai ke 4 abwab hain. Ajwaf Wawi ke 3 abwab hain. Ajwaf Yai ke 4 abwab hain. Naqis Wawi ke 5 abwab hain. Naqis Yai ke bhi 5 abwab hain. Lafif Mafruq ke
तीन अबवाब हैं और लतीफ़ मकरून के दो अबवाब हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। बस आज के लिए जो है ये हमारे सर्फियों के लिए, खासतौर पे सिस्टर शमीम, सिस्टर जैनब, इनके लिए, और सिस्टर सईदा मुखी के लिए, और जो जो लोग सर्फ के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं इंशाल्लाह उनके लिए ये आज का एक समरी थी। इसके बाद फिर सुलासी मजीदुन फी of the categories of sulasi mazidun fi. So sulasi mazidun fi, the word sulasi, whenever you hear the word sulasi, it's simple that there are three root letters. Every other letter are additional letter. Every other letter is an additional letter. We have discussed in detail about the alamat. The alamat like waw noon, ya noon, waw alif, ta maftuha, ta maksura, ta madmuma, ta ti tu, and ta sakina. Right? They are all alamat as suffixes and prefixes. Right? Huruf atain. They are all alamat. They don't have to do anything either with mazidun fi or either with sulasi mujarrad. They don't have anything to do with the dictionary. What we are studying here is the dictionary. Okay? We are not studying alamat, we are studying dictionary. So it is very important to understand that the first things are the alamat. ठीक है, जमा की अलामत, वाहिद की अलामत, जमा मुअन्नस की अलामत, वाहिद मुअन्नस की अलामत, जमा वाहिद मुखातब मुजक्कर की अलामत, वाहिद मुखातब मुअन्नस की अलामत। राइट? तो ये अलामत है, वो कहानी हमने सबसे पहले उसको क्लियर किया। ठीक है, उसके बाद फिर हम आ गए अबवाब सही में हमने सारे अबवाब को देखा। उसके बाद हमने देखा सही अस्तो, मिसाल अस्तो, मुदाफ, लफीफो, नाकिसो, महमूजो, अजवाफ, सारे हमने कैटेगरी वाइज एक एक करके देखे। अब बारी आती है मजीदुन फी की। लेकिन मजीदुन फी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड अबाउट मजीदुन फी इज दैट इट इज आल्सो वेरी वेरी यूजफुल एंड इजी टू अंडरस्टैंड अबवाब मजीदुन फी। इट इज इजियर देन व्हाट वी जस्ट डिड टुडे। ठीक है, बहुत, उससे बहुत आसान है। अब अबवाब मजीदुन फी जो है वो चेंज करते हैं एक रूट लेटर को उसकी एक दूसरी कंडीशन में, यानी कंडीशंस लाते हैं। अबवाब मजीदुन फी क्या करते हैं? कंडीशंस लाते हैं उसी वर्ब के ऊपर। ठीक है, तो इंशाल्लाह वी विल स्टडी दिस इन द, लेट मी चेक if only you students are here, so inshallah we can continue with the same one. Sida Mukhi, Zainab Ali. चलो तो फिर इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आई थिंक यहां तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के कि सुलासी मुजर्रद सही के जितने अबवाब थे वो हमने अब तक के लेसन में देखे। अब नेक्स्ट जो कैटेगरीज आ रही हैं वो सुलासी मजीदुन फी के अबवाब की आ रही हैं। राइट? सुलासी मजीदुन फी क्या मतलब है? सुलासी मजीदुन फी का सबसे पहले ये समझना जरूरी है। ऑल द डेफिनेशंस हियर आर वेरी एक्यूरेट, ओके, एंड यू कैन यूज देम एज अ रेफरेंस, यू कैन कॉपी देम डाउन इन योर नोटबुक्स। It will help you a lot. Never leave any इस्तलाहात, never leave a terminology. कोई भी टर्मिनोलॉजी आपको नजर आए, इस्तलाह आपको नजर आए, तो आप उसको जरूर लिखें अपनी कॉपी में, उसको जरूर नोट करें, क्योंकि एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारे अल्फाज आएंगे, उन सब अल्फाज को नोट करने की जरूरत नहीं है। You don't have to write all the dictionary, right? You don't have to write all of these. You just need to understand the category. So when you understand the category, then it will be according to the formula. Just give me 1 minute, please. Okay, so if you have any questions until now, please आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है? No questions? अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर जैनब। मेरे लिए ये मुश्किल दिखा, मगर कैसे गुजर रहा है? मैं फिर से आपका ये सुनूंगी लेक्चर, तो जी जी, शायद थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे लिए। इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। और अगर सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई मसला नहीं है। हर बात हर किसी को हर पहली बार में समझ नहीं आती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये हम आपको भी पढ़ कराएंगे और थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में कराएंगे। ये देखने में जरा मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये इतना मुश्किल है नहीं। ठीक है, अच्छी बात जी, आप हमारे ठीक। साथ साथ चलते रहें। अच्छा सिस्टर जैनब, आपके लिए और सिस्टर साबरा के लिए खास तौर पे मैंने एक और बुक आप लोगों के साथ शेयर की है, जिसके 3 यूनिट्स मैंने शेयर किए हैं। इंशाल्लाह उसकी समरी भी मैं आप लोगों को आज ही देता हूँ। ठीक है, ताकि आप आप, शेयर कर चुके हैं इसके ऊपर, यही ग्रुप में?
जी ये ग्रुप में शेयर करें हैं क्या, सेपरेट करें? नहीं, ग्रुप में ही मैंने शेयर किया है। ओके। ओके, देखें, द कैटेगरीज ऑफ सुलासी मजीदुन फी। Sulasi Mazidun Fi is that verb that has extra letters in addition to the three original ones, the original root letters. Sometimes there is one extra letter, while at other times there may be two or even three extra letters. There are 12 categories or abwabs in total. Abwab Sulasi मुजर्रद कितने हैं? 6 हैं। अबवाब सुलासी मजीदुन फी कितने हैं? 12 हैं। वैसे हैं तो ज्यादा, 45 अबवाब हैं, लेकिन उनमें से 12 आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बाब के इस्तेमाल की क्या जरूरत पड़ती है, ये हम आज इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। राइट, देर आर 3 अबवाब विद 1 एक्स्ट्रा लेटर, यानी बाब इफ़आल, बाब तफ़ईल और बाब मुफ़ाअला। इसमें एक एक्स्ट्रा लेटर होता है। देर आर 5 abwab which have 2 extra letters, bab tafa'ul, bab tafa'ul और bab iftial और bab infial और bab if'ilal. Then there are 4 abwabs with 3 extra letters, bab istaf'al, bab if'ial and bab if'iwal and bab if'ilal. Then to recognize the extra letters, one simply has to compare their past tense with fa, ain, lam. कैसे? शुरू करते हैं बाब इफ़आल से। देखें, जब आप अब ये चीज जो है ना, ये एकदम से समझ में नहीं आएगी, किसी को भी समझ में नहीं आएगी, कॉम्प्लिकेटेड है ये। ठीक है, इसको समझना है तो आप इसकी एग्जांपल्स को देखें। एग्जांपल्स जब आप देखेंगे तो बात बिल्कुल आसान है। राइट, बाब इफ़आल सहीह, क्योंकि बाब इफ़आल के अंदर फिर बाकी वो हफ्ता अक़साम आएंगी। सही अस्तो, मिसाल अस्तो, मुदाअफ, लफीफो, नाकिसो, महमूजो, अजवफ, ये सब बाब इफ़आल में आएंगे। अभी देखें, अल इब्दालु, अब पहले क्या था? बदला, यहां पे क्या बन गया? अब्दला। क्या चेंज करता है? बाब इफ़आल क्या चेंज लाता है? व्हाट चेंज डज बाब इफ़आल ब्रिंग्स टू सुलासी मुजर्रद? द पास्ट टेंस इज अफ़अला। दिस बाब इज मेड by adding a hamza before the fa kalima and giving the fa kalima a sukun. Right? अब इसके माने क्या है? अगर ये हो कि बदला, बदला, ही चेंज्ड, ही चेंज्ड, ये अगर सुलासी मुजर्रद में होता, अगर ये सुलासी मुजर्रद में होता, इफ इट वाज इन सुलासी मुजर्रद, देन बदला वुड मीन ही चेंज्ड, यानी ही हिमसेल्फ चेंज्ड, वो बदल गया, वो बदल गया। यहां पे क्या है? अब्दला, उसने बदल दिया, वो खुद नहीं बदला, उसने बदल दिया, ही रिप्लेस्ड। देयर शुड बी एन ईडी एट द एंड, ही रिप्लेस्ड, no, so to replace, sorry, to replace. Right, so he replaced with the ed at the end. Al ibram, abrama, yubrimu, ibraman। अच्छा देखें, बसरा, he saw, बसरा सुलासी मुजर्रद में था तो क्या था? he saw, उसने देखा। यहां पे क्या है? अबसरा, he observed। he made observe। अबतला, he to he nullified। बतला क्या था? बतला था कि वो टूट गया, वो बातिल हो गया। अब तला क्या है? उसने बातिल कर दिया। राइट, इसको कहते हैं फेल को लाजिम से मुताद्दी में ले जाना। अब इसकी पूरी जो बहस है इंशाल्लाह मैं आपको, जब इसको हम डिटेल में देखेंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। अगर बादा, अगर बादा होता सुलासी मुजर्रद में, बादा यानी वो दूर चला गया, ही वेंट अवे। सुलासी मुजर्रद में बादा, वो दूर चला गया। लेकिन इस बाब में आके अब आदा, अब आदा मीन्स टू ड्राइव अवे, उसने दूर कर दिया, वो दूर हो गया नहीं,
उसने दूर कर दिया, उसने दूर कर दिया, लाजिम को मुताद्दी बना दिया। अच्छा जी, बलगा, देखें यह है अल इबलागु। अगर ये सुलासी मुजर्रद में होता तो हम कहते हैं बलगा, बलगल उला बिकमालिही। बलगा यानी वो पहुंचा, वो पहुंचा, ही रीच्ड। लेकिन जब अब लगा कहा तो अब लगा के माने हैं ही मेड रीच, उसने पहुंचा दिया। ओके, तो ये फर्क है बाबे इफ़ाल में। अब बाबे इफ़ाल के जो मसादिर हैं और जो फेल मादी और मुदारे हैं उसको जरा जल्दी से देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब देखें इसके अंदर आपके जो अबवाब होंगे वो किस तरह आएंगे। अब्दला युबदिलु इब्दालन। अब हमेशा जो मसदर का वजन है वो सेम रहेगा, इब्दाल, इबराम, इबसार, इब्ताल, इस तरह रहेगा। ठीक है, ये सारा बाब इफ़ाल जो है इनके मसादिर के वजन जो है एक जैसे रहेंगे। अब्दला युबदिलु इब्दालन, अब्रमा युब्रिमु इब्रामन, अबसरा युबसिरु इबसारन, अबतला युबतिलु इबतालन, इबतालन, ओके, नॉट अबतालन। अबअदा युबइदु इबआदन, अबलगा युबलिगु इबलागन, अतबआ युतबिउ इतबाअन, अजलसा युजलिसु इजलासन, अहदसा युहदिसु इहदासन, अखरqa युखरिqu इखराqan. When I'm saying an at the end, don't be get confused, because whenever we say these words in a sequence, madi, mudare, and then if we need to say the masdar, right? This is the right way to say it. First madi, then mudare, then masdar. Then the masdar will have a fathatain on top of it. So it would not be al-ikhlasu, it would be sorry, al-ijlasu, it would be ijlasan, right? And then ahraqa yuhriqu ihraqan, ahsara yuhsiru ihsaran, ahbara yuhdiru ihbaran, akhbara yukhbiru ikhbaran. Ikhbar is masdar. And what is akhbar? Akhbar is a plural. खबर की जमा अखबार, अरब की जमा आराब। एक है आराब और एक है एराब। एराब क्या है, वो और चीज है, और आराब जो है वो अरब की जमा है, आराब। अच्छा जी, अखरजा युखरिजु इखराजन। मिसाल के तौर पे खरजा, इफ इट वाज इन सुलासी मुजर्रद, हम कहते हैं ही केम आउट, वो निकला, वो निकला। लेकिन जब ये चेंज हो जाता है और मजीदुन फी में यहाँ बाब इफ़आल में आ जाता है तो हम कहते हैं उसने निकाला, वो निकला नहीं, उसने निकाला, ही एक्सट्रैक्टेड, राइट। तो ये फर्क है बाब इफ़आल। जब बाब इफ़आल में कोई लफ्ज आ जाता है, कोई फेल आ जाता है, तो फिर उसके माने में ये चेंज आता है। अच्छा जी, अदबरा युदबिरु इदबारन, अदरका युदरिकु इदराकन, अदहबा युदहिबु इदहाबन। वेरी गुड एग्जांपल हियर, ज़हबा इन सुलासी मुजर्रद इट मींस वो गया, he went. And if we change it to baab if'al, then it changes the meaning to cause, to cause someone to go away, यानी भिजवाना। उर्दू में कहेंगे भिजवाना। अरसला युरसिलु इरसालन, to send out। अरशदा युरशिदु इरशादन। We are not going into the meanings please, otherwise it will be वो फैल जाएगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अभी अल्फाज की हद तक ही रखता हूँ। अरदअ युरदिउ, अज़लक़ युज़लिक़ु, अस्क़त युस्क़ितु, अस्कत युस्कितु, अस्लम युस्लिमु, अतरक़ युतरिक़ु। और बहुत ज्यादा हैं इसके अंदर। ठीक है, बाब अफ़आल में बहुत ज्यादा आपके अबवाब आते हैं। अब देखें, बाब इफ़आल, बाब तफ़ईल, बाब मुफ़ाला और वगैरह 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 जो 12 अबवाब हमने आपको बताए मज़ीदुन फ़ी के, तो ऐसा नहीं है कि हर एक रूट लेटर इनमें आता है। ठीक है, एवरी मसदर इज नॉट देयर इन बाब इफ़आल, because it cannot mean anything in bab af'al. Many of the masadir cannot mean anything in bab af'al, but the function of bab if'al is to make a fi'l lazim into a fi'l mutaaddi। जैसे वो गया और उसने भिजवाया। This is the easiest example. Let me spot a very easy example that you will always remember inshallah.
Zahaba and azhaba is a very good example, but let's see other examples as well. Zahaba and azhaba was a very good example. Salama and aslama, right? Sakata and askata. Rashada and arshada. Rasala and arsala. Zahaba and azhaba. Daraka and adraka. You just you can easily understand the function of bab ifal if you just look at this page. Ajlasa. अगर हम कहते कि जलसा, जलसा, remember this example, please don't forget this example. जलसा, वो बैठा, he sat, वो बैठा. But अजलसा, उसने बिठाया, उसने बिठाया, to make someone sit. ठीक है, to make someone sit. तो जो अफ़आल लाजिम से मुताद्दी बनाने हो तो उसके लिए बाबे इफ़आल यूज होता है. दैट्स द बॉटम लाइन ऑफ बाबे इफ़आल. बाबे इफ़आल फ़ेल लाजिम को फ़ेल मुताद्दी बनाता है. फ़ेल लाजिम क्या होता है और फ़ेल मुताद्दी क्या होता है? दिस इज अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन. राइट इट डाउन इफ यू वांट टू राइट डाउन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. फ़ेल लाजिम वो फ़ेल होता है जो अपने फ़ाइल पर ख़त्म हो जाता है, जिसमें सिर्फ फ़ाइल. फ़ेल लाजिम यूं लिखना चाहिए, वो फ़ेल है जो अपने फाइल पर खत्म हो जाता है, फाइल तक महदूद रहता है, या फाइल पर खत्म हो जाता है, या जिसको मफऊल की जरूरत नहीं होती. मौकूफ, ये जरा लिखें, मौकूफ है. जैसे शरीबा, उसने पिया. नहीं, अभी क्या एग्जांपल आई थी हमारे पास, वही लिखते हैं ना. ज़हाबा, वो गया. अज़हबा, उसने भेजा. शरीबा, उसने पिया. अशरबा, उसने पिलाया. जलसा, वो बैठा. अजलसा, उसने बिठाया. रदिया, वो राजी हुआ. अरबा, उसने राजी किया. हुआ और किया, ये फर्क है बाब इफ़आल में. यानी जब बाब इफ़आल में कोई चीज आए तो वो खाने से खिलाने में कन्वर्ट हो जाती है, पीने से पिलाने में कन्वर्ट हो जाती है, बैठने से बिठाने में कन्वर्ट हो जाती है, जाने से भिजवाने में कन्वर्ट हो जाती है. जो जो उर्दू समझते हैं इंशाल्लाह वो इस बात को बहुत आसानी से समझ लेंगे इंशाल्लाह. और ना एक क्वेश्चन है जी कि ज़हाबा से अज़हबा हो जाएगा. जी. अगर सुलासी मुजर्रद में ज़हाबा था, उसके मायने थे वो गया. और अगर इसको हम बाब इफ़आल में लेके आए और कहें अज़हबा, तो उसका मतलब है उसने भेजा. शरबा से शरेबा से अशरबा. अशरबा, उसने पानी पिलाया. ओके, ठीक है, शुक्रिया. जलसा से अजलसा. जलसा बहुत अच्छी एग्जांपल है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जलसा, वो बैठा. अजलसा, उसने बिठाया. अकला, उसने खाया. आकला, उसने खिलाया. लेकिन अकला आकला फिर महमूज की एग्जांपल है, इसलिए वो मैं नहीं लाता हूँ. ठीक है. जलसा, अजलसा, ये बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है. जलसा, वो बैठा. अजलसा, उसने बिठाया. ओके. अब ये बाब इफ़आल की एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन हमने आपकी खिदमत में अर्ज की. बाब इफ़आल क्या होता है, कैसे बनता है, और उसके मीनिंग में क्या चेंज आते हैं. सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन. अब जो हमारी जो बुक हमने आप लोगों के साथ शेयर की है, उसको भी एक नज़र हम आपको दिखा देते हैं. और उसके अंदर जो खास बात है, एक्चुअली दो मजीद बुक्स हमने आपके साथ शेयर की हैं. एक तो सर्फ के हवाले से है, जिसके इंडेक्स हम आपको बता देते हैं. सर्फ के हवाले से जो किताब है, इसके अंदर आपको तशरीफ, तमाम तशरीफ इसके अंदर आपको मिलेगी इंशाल्लाह. ये हम आपको कराएंगे. और क्या कहते हैं, ये देखिए, ये इसका इंडेक्स है. दिस इज किताब सर्फ. दैट वाज द डिक्शनरी, राइट? दैट वाज सफवतुल मसादिर. दैट वाज द डिक्शनरी. इन द डिक्शनरी यू ओनली फाइंड मसादिर. फ्रॉम मसादिर यू जस्ट extract the सर्फ सगीर.
right? Daraba, yadribu, idrib, darib, madrub, darbun. That's it, right? What we do here is we go into detail. Daraba. So what are the 14 sigas from daraba? Daraba, daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna, darabtu, darabna. So this is called the Sarf Kabir. In the Sarf Kabir, we learn from this book of Sarf. Just have a look at the index of this book. أبواب فتح يفتح سمع يسمع ضرب يضرب نصر ينصر كرم يكرم حسب يحسب. Then part 4 المجهول. What is ماضي مجهول? What is مضارع مجهول? From ضرب you make ضرب ضرب ضربا ضربوا ضربت ضربتا ضربنا. From يضرب you make يضرب يضرب يضربان يضربون تضرب تضربان يضربنا. Then we discuss about إعراب الفعل, about نفي, فعل نفي, and then we have فعل أمر, then we have فعل نهي. أمر and نهي are imperatives. Then we have ism file and ism maf'ul. So this is not verb, this is a ism file. Ism maf'ul is very, very easy to understand. Either it is on the wazn of file or it is on the wazn of muf'il, right? Okay, then we have tasrif al-saghir and kabir, key themes and vocabulary, inshallah. Then we have unit 2 of this book, which is babe if'al, babe taf'il, babe mufa'ala, babe tafa'ul, babe tafa'ul, babe if'ilal, babe ifti'al, babe istaf'al, babe infi'al, babe fa'alata, fa'alala, and babe, etc. We go into the using how to use the dictionary. We have already understood that in detail. Then we have unit 3 about the haft aqsam. لفيف استو مثال استو مضاعف. No, صحيح استو مثال استو مضاعف. لفيفو ناقصو مهموزو أجوف. So we start with mahmuz. Again, how to make mahmuz in Sarf Kabir, right? We said amara ya'muru. We just discussed these two words. Amara fail madi, ya'muru fail mudari. So what about amara? What is the Sarf Kabir for amara? Then they say that is amara, amara, amaru, amarata, amarata, amarna, amarta, amartuma, amartum, amarti, amartuma, amartunna, amartu, amarna. But what we need to understand is that in the word amara, this hamza is actually from the root letters hamza mim ra. Amara, usne hukum diya. If we take it to babe if'al, then it is amara. आमरा, उसने हुक्म दिलवाया, उसने हुक्म करवाया. अमरा, हाकिम ने हुक्म किया. अमरा, हुक्म किया. आमरा, हाकिम के वजीर ने हाकिम से हुक्म करवाया. तो ये चेंजेस आते हैं. ये देखना होता है कि कहाँ पे जो है रूट लेटर है और कहाँ पर मजीद उन फी में से है. महमूज मिन बाब दरब यदरिबु. महमूज 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 बाब मुफाला, बाब इफ्ताल, बाब तफाउल, बाब तफाउल, बाब इफ्ताल एंड इस्तफाल. And then we move to unit 4 section 1, which is al-misal. Misal wawi, fataha yaftahu. And then misal yai, misal wawi, samia yasmau, and all these details you can see them here, right here. ये इसी बिल्कुल उसी स्टाइल में बनी हुई है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये completely इंग्लिश में है. ठीक है. So you don't have to even look at the Urdu words. Then we will move to unit 4 section 2, fataha yaftahu, al-misal yai. पहले मिसाल वावी था, अब मिसाल याई, यानी जब पहला लेटर जो है वो हरूफ इल्लत हो. अच्छा, मिसाल सही हो गया, मिसाल हो गया. इसके बाद अजवफ आया. अजवफ के बाद क्या आएगा? नाकिस आएगा. नाकिस के बाद क्या आएगा? लफीफ आएगा. लफीफ के बाद क्या आएगा? लफीफ मकरून, लफीफ मफरूक आएगा, राइट. इसके बाद अब वो अब आएंगे इसके सारे. इसके बाद क्या आएगा? मुदाफ आएगा. मुदाफ के बाद क्या आएगा? मिसाल महमूजुल ऐन, मिसाल महमूजुल लाम, मिसाल व मुदाफ एक साथ. अजवफ अजवफ व महमूज, अजवफ व महमूजुल फा. ये तमाम कैटेगरीज इंशाल्लाह इल्म सर्फ में आपके साथ हम करेंगे. इसको समझाएंगे, इसको आप समझें इंशाल्लाह. परवरदिगार आप लोगों को अजर अज़ीम अता फरमाए और आप लोगों की कैपेसिटी में, आप लोगों की ताकत में, आप लोगों की हिम्मत में जो है इजाफा फरमाए. नून ताकीद सकीला बिन सहीह. नून ताकीद सकीला के किस तरह बनाते हैं, सही में किस तरह बनाते हैं, अजवफ में कैसे बनाते हैं, नाकिस में, लफीफ में, मुदाफ में वगैरह ज़ालिक. सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन.
लेकिन इसमें अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ इंडेक्स है ये बुक में। हाँ, ये अभी मैंने सिर्फ इंडेक्स भेजी है, अगर मैं पूरी बुक भेजता तो सब डर जाता। हाँ, did a good job. Thank ये अगर आप लेकिन वो पूरी बुक, पहला बुक सेम है ने, जी वो फर्स्ट बुक वाला, वो आपने जो बताया अभी, मैंने आप लोगों वो को दो हम, बुक्स दी। जो हाँ पहली बुक है ये, वो सफ़वतुल मसादिर, ओके, जो पहली बुक है वो सफ़वतुल मसादिर है, यानी वो डिक्शनरी है। वो डिक्शनरी में, इसमें डिक्शनरी, यह है कि डिक्शनरी इंग्लिश में है, अरबिक इंग्लिश है, उर्दू नहीं है। ठीक है, उर्दू पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो ये उर्दू नहीं है, ये इंग्लिश में है। और फिर जो ये दूसरी बुक मैंने आपको दिखाई जिसका इंडेक्स दिखाया है, वो सरफ कबीर हाँ की कंप्लीट किताब है कि ये बनेगा कैसे। अभी आप मेरे को कहेंगे कि क़रा यक़रअु कैसे बना, राइट, या फॉर एग्जांपल काला यक़ूलु कैसे बना, ये काला यक़ूलु, हालांकि लफ्ज तो था अल कौलु, मसदर था अल कौलु, तो हरूफ असलिया होने चाहिए थे काफ वाव लाम। तो ये काफ वाव लाम जो है, ये काफ अलिफ लाम कैसे हो गया, राइट। तो राइट, इस प्रोसेस को कहते हैं इलाल, यानी बीमारी का इलाज करना, हरूफ इल्लत का इलाज करना। एक्सप्लेनेशन है सब जी, इसकी इसमें। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, विद एग्जांपल्स, विद ट्रांसलेशंस, विद एवरीथिंग, विद द टेबल्स, विद द एक्सरसाइजेस, इंशाल्लाह हर चीज इसके अंदर So मौजूद है। you, so you will teach us. We are not going to do photocopy. Yeah. नो नो नो, डोंट फोटोकॉपी अंटिल यू आस्क मी अबाउट इट। ओके, ये जैसे Yeah. सफ़वतुल मसादिर है, अब सफ़वतुल मसादिर इज अ हाँ, डिक्शनरी, nobody can remember the whole dictionary, although there are some people yeah. who can memorize the dictionary, but not they are not, they aren't people like us। ठीक है, हमारी तरह के लोग नहीं है, वो बचपन से एक ही काम करते हैं वो लोग। ठीक है, तो फिर वो उनको डिक्शनरी भी याद हो जाती है। तो मकसद ये है कि आपको भी एक बड़ा पार्ट डिक्शनरी का समझ में आ जाएगा जब आप फॉर्मूले को समझ लेंगे। once you get a grasp on Inshallah. the formula, then all the masadir will follow the same way। okay, all Inshallah. the masadir of a particular category will follow it, but when the category changes, for example if it goes to another bab, then the rule also changes। अच्छा। ठीक है ना, वो कैसे चेंज होता है, ठीक वो कंप्लीट बात जो है ये इल्म सर्फ की जो इंग्लिश किताब है, जो अभी मैंने आपको इंडेक्स दिखाया उसमें। हाँ, ठीक है, वाज़ेह हो गई बात, क्लियर है। please. Alhamdulillah. जी। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, एनी अदर क्वेश्चंस? Today, first time I got a headache with this class. I think you should have some That's really, it was too heavy for me. yes, it was a little bit heavy for you, and sister Zainab Ali, for her it was really something, बिल्कुल सर से गुजरने वाली बात थी। लेकिन बात यह है कि देखें, पहली बार में जब कुछ सुनते हैं ना, अभी मैंने इसको एक समरी दी है आपको, अहाता किया है। अहाता यानी वी हैव डिफाइंड एंड डिस्क्राइब्ड द बाउंड्रीज ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, अब व्हेन वी टेक द वर्ड्स वन एट अ टाइम, देन इट बिकम्स इजी। इतना मुश्किल नहीं है ये, जितना आप समझ रहे हो। ठीक है ठीक है, जी। इंशाल्लाह। Anybody else? और कोई कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? No comments, no questions, no suggestions, no reviews. It's too much on your side. Thank you. Very Thank nice. you. Jazakumullah. Very good. Okay, so that's all for today, inshallah. At the end, let's recite Surah Al-Fatiha, including all our marhumeen, ulama Islam and shuhada Islam. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.